अपने कॉलेज के ना कुछ सालों में मैंने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी थी कि मटेरियल एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उससे पहले आती है मटेरियल सोर्सिंग, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसका फ़ायदा उन बच्चों को होता है जो उस जगह से बिलोंग करते हैं। एंड सोर्सिंग के लिए उनको बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स रिसर्च वर्क करना पड़ता है। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने कॉलेज डेज में इनिशियली आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है, ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है आपके रिसर्च पार्ट पे, जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं। कितनी बार हम लोग ध्यान नहीं देते कि यस, ये पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उस रिसर्च के बेस पे हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। हम कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो या आप किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में हो या कोई भी चीज़ बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको अपना रिसर्च वर्क सॉल्व रखना चाहिए अगर आप कॉलेज में हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि कॉलेज में फैकल्टी जो है ना वो देखती हैं। पहला चीज़, आपका इंस्पिरेशन कैसा है, आप कहाँ से इंस्पायर होकर सामान बनाते हो, या अगर आप कुछ भी बनाते हो तो क्या आप किसी चीज़ से कॉपी करते हो, उस चीज़ में आप कितना इनपुट देते हो ना, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ आफ्टर एग्जाम यू हैव ओनली वन थिंग टू डू, विच इज़ टू वेट. But one more important thing which you can do during this time, because guys see, during my college days, during my college years, I have felt one thing, that yes, being in designing industry, you need to do one thing very rigorously, and that is sourcing. So you should know where to source, what to source, and where to get your material in a cheapest and best price, and of course in a best quality. So yes, this is one of the thing which is very important for you. And yes, if you live anywhere in this whole world, you need to do sourcing for yourself, because without sourcing you can't create new stuff, you can't create new designs or anything whatever you want to, and it makes our life easier in daily life also. So yes, let's begin with those important points which you need to know before getting into your college, and you should focus on these aspects before choosing your department or college or your branch. So yes guys, there are some very important places where you should explore, and where you should at least go for once to explore your product, to explore materials, to know how cheaper or how expensive you can buy them, and of course you should know some alternative places to buy those products. So without any further delay, let's begin. So hello and welcome to Boundless. When I was getting into NIFT Delhi, I knew Delhi a bit, because obviously I was living in Delhi for a year, and इस पे मैंने पूरी कहानी बनाई हुई है, तो आपको पता होगा कि मैं कैसे कैसे दिल्ली में आई, बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन yes, when I was getting into college, मुझे पता था where I can buy my stuff, where I can buy materials, where I can source materials, because obviously that helps you in your college days, because the product you buy nearby your college, that is gonna be a bit expensive. So yes, you should always know some alternative places where you can budget yourself, you can go and buy lots of products in one go, and of course you can use them for multiple times. So yes guys, that was one of the very important thing which I learned in initial years. When you take your domicile certificate now, or when you take college where you live, so what happens that you get comfortable with the places, you got comfortable with the scenario, that yes, this is gonna be cheaper here, this is gonna be expensive here, and you know the market area at least. And of course it helps a bit, because you don't need to put extra effort to know the places, to go and to talk to people. You are pretty comfortable with the places. That is one of the thing. And one important thing, wherever we live now, there is always one or two places which is very rich in culture, where you can go and learn about new stuff, new material, you can touch and feel new things. So yes, that helps in your learning as well. So what are those places which helps you? If you are in Delhi, you should visit Seelampur. This is very guys underrated place, and you should go there to buy all sort of fabrics, all sort of material. If you are in a fashion designing department, or if you are in textile designing department, you should visit this place. You can buy everything so cheap, you can buy everything in bulk, and there are lots of fabrics which is good in quality and just cheap in price. So yes, you should definitely go and buy lots of fabrics over there. I also did lots of my sourcing from there in my college days. And second point is, you should definitely visit Delhi Heart. Why not guys? Delhi Heart is one of the places where you can find lots of different kinds of handlooms, or you can find lots of different kind of craft materials. You should go and explore there for sure. You will learn a lot of things. You will learn about lots of material, lots of culture, lots of art forms, and of course lots of prints and textiles. And of course, being in Delhi, how can you forget
Chandni Chowk. You should go there and should visit lots of places over there, such as Sadar Bazaar. You should go and visit Kanadi Bazaar. These are some places where you will buy lots of different materials, or of course there are lots of big designers who also source from there. So you should go there and do lots of sourcing of your materials, of your textile products, of your trims. बहुत सारी चीज़ें हैं guys which you can get there, and of course good food for sure. And the next important point is gonna be Sarojini Nagar market and Lajpat Nagar market. And of course guys, when you need to buy lots of fabrics in Than, होता क्या है ना, we end up investing a lot. And when you need to create a garment, there are some tips guys जो कि मैं आपको अभी दूंगी. You can go to Sarojini, you can go to Lajpat Nagar market, you can buy cheaper fabrics, you can buy cheaper garments, constructed garments, and you can reconstruct them, you can deconstruct them, you can create new things out of that, and it helps you to save your money as well. If you are doing any product, like if you are making a product from scratch, yeah, these fabrics are gonna be super like cheaper for you, and you don't need to buy whole Than or waste them for just some products. So yes, you can do these things. And यहाँ पे आते हैं guys एक और important चीज़ के साथ, similar kind of markets. These are the gems guys of Delhi, लेकिन ऐसे ही काफ़ी सारे gems हैं जो कि इंडिया के और भी places में like बॉम्बे, बेंगलुरु, गोवा, एवरीवेयर यू कैन फाइंड. एंड बीइंग अ डिज़ाइनर एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, आपको बहुत सारी जगहों को विजिट करना चाहिए गाइस टू नो द प्रोडक्ट, टू नो डिफरेंट कल्चर, टू नो डिफरेंट वे ऑफ डिज़ाइनिंग थिंग्स. ठीक है, तो अगर आप वो करते हो आपको बहुत हेल्प होता है कुछ नया क्रिएट करने में. एंड ऑफ कोर्स कॉलेज में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हो तो रिसर्च वर्क भी आपकी एक बहुत सॉलिड हो जाती है. कॉलेज में पॉसिबल नहीं है कितनी बार कि आप जाकर वो सारी चीज़ें करो, तो वहाँ पर गाइस आप एक चीज़ कर सकते हो, आप बस कहीं भी ना बस निकल जाओ, सुबह निकलो, शाम निकलो, अपने आसपास की जगहों को जाकर विजिट करो. कुछ न्यू आपको चीज़ें दिखने को अपने आप मिलने लगेंगी. हम लोग सोचते हैं कि कुछ नया नहीं मिल रहा, बिकॉज गाइस हम वैसे पीक टाइम पे जा रहे होते हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है. सुबह के टाइम पे जाओ, कैमरा लो और फ़ोन लो और बस निकल जाओ, एंड उससे आपको बहुत कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिलती है फॉर श्योर. वहीं पर गाइज आपको मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आपके पास एक्सेस है तो विज़िट करो बहुत सारी अलग अलग जगहों को, तो विज़िट करो बहुत सारे अलग अलग विलेजेस एरिया को, क्योंकि रूरल एरियाज में ना काफ़ी अलग अलग क्राफ्ट छुपा हुआ है गाइज. एंड येस, बीइंग इन कॉलेज यू एक्सप्लोर दीज क्राफ्ट्स एज वेल, तो वो चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है टू ग्राउंड. एंड जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हो ना तो आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो, एंड जब आप आर्टिजन्स के साथ कनेक्ट करते हो तो अपने आप ही आपकी जो जनता है, आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्ट करने लगती है. कोई ऑटो करने की या कोई कैब करने की ज़रूरत नहीं है, बस वॉक करो, जितना ज़्यादा वॉक कर सकते हो, क्योंकि ना स्ट्रीट फोटोग्राफी जो होती है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइनिंग. ये मेरा मानना है गाइस, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हो आपको मौका नहीं मिलता है, आप कहीं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते हो, आपको ना बहुत ज़्यादा काम होता है. सच बताओ तो बहुत ज़्यादा काम होता है, उस काम को आपको करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो यू आर गोना बी सुपर बिजी. बट उस बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस चीज़ को एक्सप्लोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैज क्रैक्ड निफ्ट इन 2023. बट वॉट अबाउट फॉर दो स्टूडेंट जो कि अभी नेक्स्ट ईयर में, अपकमिंग ईयर्स में एग्जाम देने वाले हैं. गाइस फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी, एंड फॉर दैट यू कैन ज्वाइन बाउंडलेस विंग्स डिजाइन. एंड उसके लिए आप करना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट, एंड देन यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग क्लासेस विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. एंड येस गाइस, फ्री ट्रायल क्लासेस है, फ्री डेमो क्लासेस है, सो व्हाई टू वेट. So to join Boundless Wings Design coaching classes, you can go and डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप जाओ, फटाफट से कांटेक्ट करो हमें. इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो. हमारे क्लासेस गाइस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो कर क्या रहे हो, फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है गाइस, तो फटाफट से वो फ्री डेमो क्लासेस लो. एंड मिलते हैं जल्दी. सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर क्या रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा. अगर आपने अभी तक अपनी सोर्सिंग स्टार्ट नहीं की है तो जहाँ भी रहते हो जाओ, अपने आसपास के एरियाज़ में जाओ, देखो वहाँ पर कौन सी पेपर, कौन सी फैब्रिक, कौन सी मटेरियल कहाँ मिलती है. एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो मिलते हैं जल्दी. सी यू सून.